Good morning, everyone. Very good morning. तो आपणकर जो 7th जून रे एग्जाम आसुची ओपीएससी प्रिलिम्स ता पई आमे आज कोन करबा एंटायर इंडियन एंशिएंट हिस्ट्री एंड ता सहित जहा भी रिलेटेड आर्ट एंड कल्चर रो पार्ट अछि ताकू आमे एठी गोटिए सिंगल मैराथन सेशन रे ताकू आमे ओवरऑल देखिकी कंप्लीट करबा ठीक अछि बट स्टार्ट करिया आगरो क्लास टी मते खाली एठी टिके कहि दियंतु कोनोसी बफरिंग प्रॉब्लम हैला कि जो मु पीपीटी ओपन करिछि जदि सेटा विजिबल होनी एंड इम्पोर्टेंट कि ऑडियो ठीक अछि कि नाही ओके एठी मते एठी मु टिके 1 मिनिट दउछि एठी समस्तंकु एठी मते टिके जणै दियंतु जो माने भी लाइव अछंती तापरे आमे क्लास स्टार्ट करिवा ओके तो कहउचंदी क्लियर अछि बोली तो मु अज्यूम करूची कि सब क्लियर अछि फर्स्ट हमें देखि देबा टॉपिक्स हमें आ अंडर रे कोन कोन हमें कवर करिबा 11टा टॉपिक हमें कवर करिबा आई गेस फर्स्ट रहिबो इंडियाज कल्चर एंड इट्स कंटिन्यूटी देन स्टोन एज देखिबा देन हरप्पन सिविलाइजेशन वैदिक पीरियड माने अर्ली वैदिक एंड लेटर वैदिक एथिरे दीटा जाक रहिबो तापरे महाजनपदस मौर्यन एम्पायर पोस्ट मौर्यन एंड इंडो ग्रीक्स गुप्ता पीरियड संगम पीरियड एंशिएंट इंडियन स्कूल्स ऑफ आर्ट एंड लास्टली आमे टिके ब्रीफली डिस्कस करिबा टेंपल आर्किटेक्चर को ठीक अछि तो क्लास स्टार्ट हबा आगरु मु कहि दोची पीपीटी जो रहिबो एंड प्रेजेंटेशन आपण एठी जहा देखिबे सेटा एंटायरली फैक्चुअल रहिबो एम्ति कोनोसी पैराग्राफ हैला कि बड़ बड़ सेंटेंसेस रहिबनी ठीक अछि तो मेक श्योर करिवे कि ये पीपीटी को आपण डाउनलोड करि नेबे जदी आपण को एटा प्रोवाइड होउची एंड मु कहबी कि कॉपी पेन नै कि बसंतु जो पॉइंट की किछि भी फैक्ट आपणकर नोट्स रे नथिबो ताको कोन करिवे ऐड करि देबे ठीक अछि ओके फर्स्ट इंडियाज कल्चर एंड इट्स कंटिन्यूटी द लिविंग हेरिटेज ऑफ इंडिया हेरिटेज माने कोन हेरिटेज रे कोन कोन इंक्लूड होची हेरिटेज रे हमर कल्चरल हिस्टोरिकल नेचुरल एसेट्स जोडा कि इनहेरिट होची फ्रॉम द पास्ट एंड एटा गोटे जेनेरेशन रो आ गोटे जेनेरेशन को पास ऑन हेई थाए जोथरे कि ट्रेडिशन कस्टम मॉन्यूमेंट्स आर्ट फॉर्म लिटरेचर एंड कलेक्टिव मेमोरी भी इंक्लूड हुए तो इंडियन हेरिटेज रो नेचर कोन एटा गोटे पास्ट रो खाली गोटे रेलिक नुह एटा होची डायनामिक आ गोटे लिविंग फोर्स जे कि एबे भी हमर प्रेजेंट लाइफ को इन्फ्लुएंस करे सो ये इंडिविजुअल और नेशनल आइडेंटिटी को शेप करूची जे कि ट्रेडिशन को प्रिजर्व करिबा साथ ही साथ से चेंजिंग टाइम सहित भी अडाप्ट होची सो इंपोर्टेंस कोन हेरिटेज रो से इट प्रोवाइड्स अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग एंड आइडेंटिटी connect the present generation with their roots, offers lessons from history, inspires creativity and innovation, act as guide for the future. Okay. इंडियन कल्चर और तार फीचर देखिया को गले कल्चर रे हमर जेमदी शेयर्ड बिलीफ हैला वैल्यूज कस्टम ट्रेडिशन सोशल प्रैक्टिसेस ए सबु जाउची कल्चर रे जोथरे कि लैंग्वेज रिलीजन आर्ट एंड लिटरेचर म्यूजिक डांस फूड हैबिट सोशल बिहेवियर ए सबु होची कल्चर रो पार्ट ठीक अछि एंड मेजर फीचर्स ऑफ इंडियन कल्चर हमें देखिया गले कंटिन्यूटी एंड अडैप्टेबिलिटी जो एंशिएंट ट्रेडिशंस हमर रहिची से एबे भी कंटिन्यू हेई चलीची जेनेरेशन बाय जेनेरेशन कल्चर इवॉल्व होची किंतु तारा रूट्स को से रिटेन करी की रखी छी फॉर एग्जांपल वर्शिप ऑफ शिवा इज लिंक्ड टू प्रोटो शिवा ट्रेडिशंस
प्रोटोशिवा ट्रेडिशन कौन आमे एटा हरप्पन रे देखिबा syncretism and absorption रे तर ability to absorb and integrate foreign influences creates new cultural form through interaction example जेमति कि इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर उर्दू लैंग्वेज स्पिरिचुअलिटी एंड फिलोसॉफिकल डेप्थ रे स्ट्रॉन्ग एम्फसाइज दिया जाए स्पिरिचुअल और फिलोसॉफिकल थॉट को जेमति की कांसेप्ट हला धाम धाम माने कोन ड्यूटी कर्म एक्शन एंड कॉन्सिक्वेंस को कर्म कहते मोक्ष माने होची लिबरेशन यूनिटी इन डाइवर्सिटी डाइवर्स कल्चर्स कोएक्सिस्ट विद इन वन सिविलाइजेशन गोटे सिविलाइजेशन भितर भी अलग अलग कल्चर कोएक्सिस्ट से माने करि परिबे डाइवर्सिटी इन लैंग्वेजेस जेमि हमर इंडिया रे जेमि बहुत सारा लैंग्वेज एठी कुहा जाय देन रिलीजन भी अछि रीजन कस्टम्स मेंटेन अ कॉमन सिविलाइजेशनल आइडेंटिटी सरला गोटे ओवरव्यू आमे देखिले कल्चर रो एंड हेरिटेज रो सेकंड चैप्टर हमर रोल ऑफ आर्ट एंड कल्चर इन शेपिंग हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर सिग्निफिकेंस कोन कि दे आर द एक्टिव फोर्सेस ऑफ हिस्ट्री से माने केवल हिस्ट्री को रिफ्लेक्ट करंतनी से माने ताको शेप भी करंती फंक्शन से गोटे सोसाइटी को एज अ मिरर हिसाब रे से फंक्शन करे रिफ्लेक्ट सोशल वैल्यूज बिलीव्स एंड कंडीशंस हेल्प अंडरस्टैंड द हिस्टोरिकल पीरियड्स एज एन इंजन ऑफ चेंज से सोशल रिलीजियस एंड पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन को भी इन्फ्लुएंस करे न्यू आइडियाज को प्रमोट करे एंड मूवमेंट्स को भी प्रमोट करे एक्ट एज एन एडहेसिव ऑफ सोसाइटी माने जोड़ी की रखे से शेयर्ड आइडेंटिटीज थ्रू अ कलेक्टिव कॉन्शियसनेस थ्रू इट एक्ट्स एज एन एडहेसिव ऑफ सोसाइटी strengthen the social cohesion and national unity art and material culture as historical evidence art provide करे direct evidence about the past societies सेथिरु हमकु कोन जणा पड़े टेक्नोलॉजी से ठीक केमिति को इकोनॉमी को टाइप रो इकोनॉमी थिला सोशल स्ट्रक्चर केमतिया थिला रिलीजियस बिलीफ कोन थिला डेली लाइफ केमति थिला एग्जांपल्स जदि हमें देखिबा भीमबेटका रॉक आर्ट तो भीमबेटका रॉक आर्ट रे हमें कोन देखिया को पाई थाउ हंटिंग प्रैक्टिसेस सेठी हमें देखिया को पाई थाउ केमिति हंटिंग प्रैक्टिसेस से टाइम रे कैरी आउट होतिला एनिमल्स एंड कम्युनिटी रिचुअल्स सेटा भी से रॉक आर्ट रे डिपिक्ट है कि अच्छी गिव्स इनसाइट इनटू प्रीहिस्टोरिक लाइफ Harappan artifacts they reveal the religious practices indicate the trade network suggest centralized administration temple sculptures जो रहिला से टाइम रे कोर्ट लाइफ केमती थिला मिलिटरी प्रोसेशन आ लोक मानको लाइफस्टाइल केमती थिला सेटा को भी सेथरे पोर्ट्रे करा जाई थाए आर्ट एज पावर एंड प्रोपेगेंडा सिग्निफिकेंस हला कि जो रूलर्स माने रहिले दे यूज्ड आर्ट एंड आर्किटेक्चर टू लेजिटिमाइज देयर अथॉरिटी से माने कोन करथले पावर प्रेस्टीज और पॉलिटिकल कंट्रोल को सेही थ्रू रो डेमोंस्ट्रेट करथले फॉर एग्जांपल जो आमे मौर्यन पिलर्स जोटा कि अशोकंक द्वारा बना जाइतिला इट सिंबलाइज द इंपीरियल रीच प्रमोटेड धाम एंड मोरल अथॉरिटी गुप्ता टेम्पल्स एंड कॉइन्स रे प्रॉस्पेरिटी रिफ्लेक्ट से टाइम रे केमदी प्रॉस्पेरिटी थिला गुप्ता एज रे एंड इट प्रोजेक्टेड रॉयल पावर एंड कल्चरल एक्सीलेंस बृहदेश्वर टेम्पल जोड़ा चोल टेम्पल बिल्ड बाय द राजा चोल इट सिंबलाइजेस द एब्सोल्यूट रॉयल अथॉरिटी एंड डेमोन्स्ट्रेटेड आर्किटेक्चरल एंड पॉलिटिकल पावर शेपिंग आइडेंटिटी एंड सोशल कोहेशन रे सिग्निफिकेंस हला कि कल्चरल ट्रेडिशन शेयर्ड कल्चरल ट्रेडिशन क्रिएट यूनिटी कलेक्टिव आइडेंटिटी प्रमोट करा जाए एंड diverse among the diverse groups for example vedic literature जोटा कि common religious create करथिला and social values create करथिला इंडो आर्यन communities को unify करथिला रामायण महाभारत होची से influenced cultural values across India promoted common ethical ideals नगर and द्राविड़ temple styles जेमति कि regional cultural identities को strengthen करथिला and preserve distinct architectural traditions Role of art and culture in shaping history.
आमे देखुचे कैटलिस्ट फॉर सोशल एंड रिलीजियस चेंज तार सिग्निफिकेंस है आर्ट एंड कल्चर से कौन करे एक्जिस्टिंग ट्रेडिशन को चैलेंज करे न्यू आइडियाज को स्प्रेड करिबारे हेल्प करे एंड सोशल रिफॉर्म्स रे भी हेल्प करे फॉर एग्जांपल बुद्धिस्ट आर्ट इट सिंबलाइज्ड बुद्धिस्ट टीचिंग्स एंड प्रमोटेड एक्सेसिबल पाथ टू साल्वेशन भक्ति मूवमेंट जेमति कि से वर्नाकुलर लैंग्वेज को यूज करूतला रिचुअलिज्म को चैलेंज करथिला एंड कास्ट बैरियर को भी चैलेंज करथिला रिलीजन को गोटे पर्सनल एंड इंक्लूसिव हिसाब रे से टाइम रे सजेस्ट करथिला कि दैट रिली मेड रिलीजन मोर पर्सनल एंड इंक्लूसिव Geography's influence on Indian art and culture. Important. Geography रो कौन importance रहुची? Geography से कौन करुची Indian culture, art, tradition और civilization को shape करुची. And it influence settlement patterns को जगरे civilization से settle हेबे आसी के लोक माने resources, trade, cultural interactions ये सब को influence करे. Geography's role in preserving India's culture. Himalayan fortress रो role होची से गोटे natural protective barrier हिसाब रे act करे and it reduce the large scale foreign invasions because it act as a natural protective barrier. Impact थिला कि जो indigenous tradition मान को सेटा allow कला to develop continuously, facilitated growth of Hinduism, Buddhism and Jainism, helped preserve the ancient text. Example जेमती महाभारत, रामायण. Internal geographic barrier रो feature होची Vindhyan range, Satpura range, dense forest and Thar desert. Impact एया कि regional diversity को preserve करिथिले, then local tradition को protect करथिला and language को भी protected. Encourage the distinct cultural development. Example जेमति कि Tamil linguistic heritage रो preservation, survival of tribal cultures and folk traditions. Fertile plains रो role जदि हमें देखिबा agricultural surplus को support करथिला, it supported agricultural surplus and जो large kingdoms माने रहिले से माने गोटे जगह रे एते बड़ बड़ kingdom केमिति empire and kingdom establish केमिति हला काइना fertile plains it enabled their growth. एबे visible अछि समस्तंकु तो आमे देखुचे गोटे सेकेंड
geography's influence ଗୋଟେ second ଟିକେ 2 minutes ଟିକେ time ଦିଅନ୍ତୁ ଏଟା ଟିକେ technical glitch I guess ହଁ अरे geography and culture ଆମେ ଦେଖୁଥିଲେ geography କଣ shape କରେ art culture trade and regional identities natural barriers it preserve the diversity roots and coastlines promoted cultural exchange फर्स्ट आमे देखिबा geographical barriers रे फर्स्ट होची river valleys जो रहिला ताकू कोन कहंती cradles of civilization ठीक अछि impact आर कोन ये एग्रीकल्चर और अर्बनाइजेशन को सपोर्ट करे एंड इट आल्सो एनकरेज डेवलपमेंट ऑफ आर्ट एंड कल्चर and the examples are Harappan civilization pottery seals bronze sculptures Pataliputra रे जेनी Mauryan pillars and Buddhist stupas आपण माने देखिबा को पाई आमे देखिबा को पाई थाउ then mountains they act as barrier and corridor जेमती हिमालय से कोन इंडियन सिविलाइजेशन को प्रोटेक्ट करबा सहित कल्चरल एक्सचेंज को एनेबल करे विथ सेंट्रल एशिया फॉर एग्जांपल गांधार स्कूल इंडियन प्लस ग्रीक रोमन इन्फ्लुएंस रहिछि विंध्या रेंज होछि से नॉर्थ आउ साउथ इंडिया को कल्चरली डिवाइड करे जहार रिजल्ट होछि नगर स्टाइल आपण देखिया को पाइबे टेंपल आर्किटेक्चर जोडा नॉर्थ साइड रे एंड द्राविड़ स्टाइल होछि सदर्न साइड रे natural resources determine the art forms जेमती कि स्टोन सांची स्तूप रॉक कट केव्स अजंता और एलोरा ब्रोंज जेमती चोला ब्रोंजेस नटराज स्टैच्यू कोस्टलाइन ट्रेड एंड कल्चरल एक्सचेंज हिसाब रे तार इंपैक्ट रही मैरीटाइम ट्रेड को प्रमोट करिबारे एंड इंडियन कल्चर अब्रॉड स्प्रेड करिबारे and the examples are Hindu Buddhist influence in the Southeast Asia cultural link with Cambodia and Indonesia continuity of Indian civilization why has Indian civilization survived for thousands of years तरीके Indian civilization continue कौन पाई कला कहीं ना स्ट्रॉन्ग जोग्राफिकल प्रोटेक्शन थिला फ्लेक्सिबल और अडैप्टिव रिलीजियंस थिले एंड स्टेबल सोशल इंस्टीट्यूशंस थिला एंड फॉरेन कल्चर्स को इजीली एसिमिलेट करि पारुतले इंस्टेड ऑफ रिजेक्शन ज्योग्राफी में देखिले इट एक्टेड एज शील्ड ऑफ प्रोटेक्शन हिमालयस देखिले देन इंटरनल स्ट्रक्चर्स इन विंध्यास फॉरेस्ट डेजर्ट्स ए सब हमें देखिले देन अब्सॉर्प्टिव थिले सिंक्रेटिक इन नेचर थिले सेंट्रलाइज्ड डॉगमा नथिला कहीं सिंगल फाउंडर नथिले कोनोसी सिंगल होली बुक नथिला फ्लेक्सिबिलिटी थिला अडैप्टेबिलिटी थिला देन अब्सॉर्प्शन प्रोसेस बितांकर थिला they didn't reject new beliefs were incorporated rather than rejected for example जो local deities थिले से माने हिंदू ट्रेडिशन रे absorb हेले and buddha accepted as an avatar of vishnu
की फीचर्स जेमति कि इंटीग्रेशन नॉट रिप्लेसमेंट, continuity of Indian civilization, Varna or Jati system and cultural continuity, framework beyond the state. Eta continue kala even when kingdoms rose or fell, maintain the social organization, hereditary preservation re skill, craft, ritual, knowledge e sabu generation by generation pass on hela. Result hela ki traditional occupation of customs eta ebe bi survive kari asuchi for centuries. इन्वेजन एंड एसिमिलेशन रे देखिबा कल्चरल एसिमिलेशन नॉट रिप्लेसमेंट, फॉरेन ग्रुप्स जे थिले से माने इंडियन कल्चर को अडॉप्ट करथिले, फॉर एग्जांपल ग्रीक, शाकर्स, कुषाणस एंड से माने कोन अडॉप्ट करथिले इंडियन रिलीजन को, लैंग्वेज को एंड कस्टम्स को. इंडो इस्लामिक सिंथेसिस रे हमें जदि देखिबा टर्को अफगान और मुगल इन्वेजन परे कल्चरल ब्लेंडिंग हेला इंस्टेड ऑफ कंप्लीट रिप्लेसमेंट. फॉर रिजल्ट जेमति कि इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर आपण माने देखिबा को पाई थाओ, उर्दू लैंग्वेज, हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक, Stone Age. Stone Age. Stone Age ର ମାନେ କଣ? स्टोन एज ର ମାନେ କଣ? ଏଟା ହଉଛି अर्ली प्री हिस्टोरिक फेज ऑफ इंडिया एंड आकु कैरेक्टराइज ए एज को केमिति करा जाए बाय द यूज ऑफ स्टोन टूल्स. ओके एंड आकु डिवाइड करा जाइछि पैलियोलिथिक बा ओल्ड स्टोन एज, मेसोलिथिक बा मिडिल स्टोन एज एंड नियोलिथिक बा न्यू स्टोन एज. पैलियोलिथिक एज होची ओल्ड स्टोन एज जहार टाइम पीरियड होची 2.5 मिलियन इयर्स थ्रू 10,000 BCE. 2.5 मिलियन इयर्स एगो माने 10,000 BCE होची तार टाइम पीरियड. लाइफस्टाइल सेतबेले कोन लोक मानकर लाइफस्टाइल थिला? सेतबेले से माने नोमैडिक हंटर गैदरर्स थिले, से माने छोटो छोटो ग्रुप बनै कि रहउथिले एंड से माने हंटिंग एंड फूड गैदरिंग ऊपर डिपेंड करूथिले तांकर जीवन यापन करिया पई कि एंड से माने केव्स आ रॉक शेल्टर को यूज करूथिले. एठी आपण ए पिक्चर रे देखि परिबे एगुडी को होची से स्टोन एज टाइम रो किछिटा स्टोन टूल्स. ओके तो एठी स्टोन एज रे हमें कोन देखिले? सेकंड हाँ, तो स्टोन एज रे हमें कोन देखिले को टूल से टाइम रे यूज होतला? फर्स्ट तो हैंड एक्सेस यूज होतिला, चॉपर्स यूज होतिला. एठी टिके आपण देखिके एठी प्रिमिटिव भी लागु छी ना, एते एडवांस नुहंती. क्लीवर्स यूज होतिला. इंपोर्टेंट साइट जेमति मन रखिबो भीमबेटका जोटा कि मध्य प्रदेश रे अछि आ अत्तिरम पक्कम जोटा तमिलनाडु रे अछि. देन हमर आसी गला मिडल एज बा मिडल स्टोन एज जहार टाइम पीरियड थिला जस्ट अ सेकंड एक्सक्यूज मी 10,000 BCE ରୁ 4,000 BCE. ओके तांकर लाइफस्टाइल थिला कि एटा गोटे ट्रांजिशन फेज थिला जो
ओल्ड स्टोन एज थिला जो मेसोलिथिक टा जोटा थिला सेटा होची गोटे ट्रांजिशन फेज से माने हंटर गैदरर्स रु मूव कले टुवर्ड्स सेटल्ड लाइफ बिगिनिंग ऑफ एनिमल डोमेस्टिकेशन सेतबेले कोन करथले से माने खाली हंट करूथले एंड फूड आइटम्स गैदर करूथले टूल्स एठी जेमि माइक्रोलिथ छोटो छोटो स्टोन टूल्स स्मॉल स्टोन टूल्स एरो हेड स्क्रैपर्स याकू सब यूज करूथले इंपोर्टेंट साइट होची बागोर जोटा राजस्थान रे अछि आदमगढ़ एंड मध्य प्रदेश रे अछि नियोलिथिक एज होची न्यू स्टोन एज टाइम पीरियड होची 4000 बीसीई रु 2000 बीसीई लाइफस्टाइल से टाइम रे लोक मानकर कोन थिला से टाइम रे एग्रीकल्चर स्टार्ट हेई जाइतिला विलेज लाइफ माने गोटे सेटल्ड विलेज लाइफ से माने सेमती रहुतले विलेज रे रहिबा स्टार्ट कले नोन एज द नियोलिथिक रेवोल्यूशन क्रॉप्स जेमति कि व्हीट एंड बार्ली से माने ग्रो करूतले टूल्स एठी देखिबे टिके एडवांस्ड लागुची पॉलिश्ड स्टोन टूल्स टिके पॉलिश्ड अछि एक्सेस अछि एडजेस अछि इंपोर्टेंट साइट जेमति मेहरगढ़ भुरसा होम चिरन आर्ट एंड कल्चर से टाइम रे रॉक पेंटिंग्स रो फीचर कोन थला एटा होची अर्लीएस्ट फॉर्म ऑफ आर्ट पत्थर रे से माने कोन करूतले पेंटिंग करूतले ठीक अछि मेनली से माने कोन पेंट करूतले एनिमल मान को करूतले आ से माने जो हंटिंग करूतले तो सेही सीन को पेंट करूतले फाउंड ऑन केव वॉल्स एंड रॉक शेल्टर्स ए जेमदी रॉक शेल्टर्स बा केव वॉल्स रे एठी एमतिया जगह को गले आपण देखि परिबे कि सेथिरे पेंटिंग हेतिबो एनिमल्स हो कि हंटिंग सीन रहो मेजर साइट होची भीमबेटका रॉक शेल्टर्स रोल ऑफ नॉन लिटरेरी सोर्सेस इन अंडरस्टैंडिंग एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री माने होची नॉन लिटरेरी सोर्सेस ये इट हेल्प इन रिकंस्ट्रक्ट एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री व्हेल रिटन रिकॉर्ड्स आर एब्सेंट मेजर सोर्सेस होची रॉक पेंटिंग एंड पॉटरी ओके रॉक पेंटिंग्स आमे टिके ग्लिम्स देखिबा इनटू प्री हिस्टोरिक लाइफ मेजर साइट होची मुटिए जूम इन कर दोची मेजर साइट हमर होची भीमबेटका मध्य प्रदेश से जोटा अछि एंड से रिवील कोन करंदी इकोनॉमिक लाइफ माने लोक मानकर से टाइम रे जो हंटिंग एक्टिविटी थिला फूड गैदरिंग से माने केमिति करथले देन तांकर सोशल लाइफ पे से माने से थ्रू रु रिवील हुए आमे जानिया को पाइथौ कम्युनल बा ग्रुप एक्टिविटी से माने कोन करथले कम्युनिटी इंटरैक्शंस कोन से सब पेंट हेकी अछि से समस्त कर देन रिलीजियस बिलीफ्स तांकर कोन थिला रिचुअल प्रैक्टिसेस देन स्पिरिचुअल बिलीफ्स ओके एंड रिलीजियस कॉन्सेप्ट्स शैमनिज्म सिंपैथेटिक मैजिक ए सब भी कैरी आउट होतला से टाइम रे अदर सिग्निफिकेंस जेमति आर्टिस्टिक स्टाइल सेरा इंडिकेट करे एनवायरमेंटल चेंज टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स पॉटरी पॉटरी रो हमें कोन जानिया पाइथौ देखंतु एठी ऐड करछि एठु भी जानि पारुथिबे कि ये टेक्नोलॉजिकल और सोशल एवोल्यूशन को रिफ्लेक्ट करूतला सिग्निफिकेंस की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को शो करूतला फ्रॉम हैंडमेड पॉटरी टू व्हील मेड पॉटरी हेल्प ट्रेस द सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट इंपोर्टेंस कोन एमति डिफरेंट पॉटरी शेप्स रो बा टाइप्स रो फर्स्ट होची नियोलिथिक पॉटरी सीए इंडिकेट कला बिगिनिंग ऑफ सेटल्ड एग्रीकल्चर एसोसिएटेड विद द विलेज लाइफ हरप्पन पॉटरी से गोटे ऑर्गेनाइज्ड अर्बन सोसाइटी को रिफ्लेक्ट करतला शोज एडवांस्ड क्राफ्टमैनशिप NBPW होची northern black polished ware होची it is associated with the Mauryan period indicates the luxury and prosperity एटा देखि परिबे एटा होची northern black polished ware Harappan pottery ठीक अछि एटा होची OCP ochre colored pottery एटा used for identifying the cultural phases helps in dating archaeological sites PGW होची painted grey ware important marker or a distinct cultural period helps establish the chronology pottery और trade हमें केमती connect करबे evidence of trade network Harappan pottery सेटा कोठी अछि मेसोपोटामिया रे देखा जाय and indicate the overseas trade roman pottery india रे अछि indicates the indo roman trade and cultural contacts Harappan civilization indus valley civilization start करिबा take 2 minute break
ताको ब्रोंज एज सिविलाइजेशन भी कुआ जाए काहाको हरप्पन सिविलाइजेशन को पीरियड होची 3300 BCE रो 1900 BCE and it is one of the three earliest river valley civilization होची कोन इंडस वैली तीनटा रिवर वैली सिविलाइजेशन किए गोटे होची इंडस वैली सिविलाइजेशन गोटे इजिप्ट एंड मेसोपोटामिया and it is largest among the three एरिया कवर केते हेची 8 लाख स्क्वायर किलोमीटर स्प्रेड अक्रॉस पाकिस्तान नॉर्दर्न इंडिया एंड द नॉर्थ ईस्ट अफगानिस्तान की फीचर्स कोन हरप्पन सिविलाइजेशन अर्बन प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर हमें देखिया को गले फर्स्ट होची क्लासिफिकेशन ऑफ सिटी सिटाडेल होची तांगर अपर टाउन जोटा की एलिवेटेड ऑफ फोर्टिफाइड एरिया थिला एंड पॉसिबली रेसिडेंस ऑफ रूलिंग और एलिट क्लास रूलिंग बा एलिट क्लास कोठी रहउतले जो अपर टाउन बा सिटाडेल एरिया सेठी रहउतले कंटेंट पब्लिक बिल्डिंग्स एंड ग्रैनरीज लोअर टाउन टा होची रेसिडेंशियल एरिया थिला जो कॉमन पीपल माने सेठी रहउतले सेंटर फॉर डेली लिविंग एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज थर्ड सेटलमेंट एरिया थिला तांकर किछि साइट रे जोटा कि लोकेटेड बिटवीन सिटाडेल एंड लोअर टाउन इट इज ऑक्युपाइड बाय स्किल्ड आर्टिसंस ट्रेडर्स एंड क्राफ्ट्समैन कंस्ट्रक्शन मटेरियल से माने कोन यूज करतले मेन मटेरियल जेमति कि सन ड्राइड ब्रिक्स बर्न्ड ब्रिक्स एंड मड ब्रिक्स से माने यूज करतले स्टैंडर्डाइजेशन एटा बहुत इंपोर्टेंट एटा मने रखिबे तांकर जो इट्टार गोटे स्टैंडर्ड रेशियो से माने मेंटेन करतले 1:2:4 थिकनेस विड्थ आउ लेंथ 1:2:4 से माने मेंटेन करिकि चालुथिले स्टोन को यूज करूथिले बहुत विलेजेस रे स्टोन मेनली यूज होतिला जोति फाउंडेशन ड्रेन्स पई की यूज होतिला स्टोन्स ड्रेनेज सिस्टम तांकर हाईली डेवलप्ड ड्रेनेज सिस्टम थिला जोति आंसर रे ऑप्शन रे आपनकर कहितिबो कि ड्रेनेज सिस्टम तांकर एते भी डेवलप नथिला काहेकि ना जेहेतु आमे एंशिएंट हिस्ट्री कथा आमे कहूचे नाइ तांकर हाईली डेवलप्ड ड्रेनेज सिस्टम थिला इट इज प्रेजेंट इन सिटीज टाउन्स एंड विलेजेस स्ट्रक्चर कौन थिला जो हाउस ड्रेन्स थिला से गुडी को स्ट्रीट ड्रेन्स को कनेक्ट हेतला स्ट्रीट ड्रेन्स जो बड़ बड़ मेन ड्रेन थिला ता सहित कनेक्ट हेतला देन जो मेन ड्रेन थिला दे आर एम्प्टीड आउटसाइड द सिटी लिमिट्स okay then construction covered the drains covered using the brick slabs stone slabs corbelled arches waste management से माने केमदी करथले रेक्टेंगुलर सोक पिट्स थिला जोटा कि इंटरवल्स प्लेस्ड एट इंटरवल्स यूज्ड फॉर कलेक्टिंग द सॉलिड वेस्ट स्पेशल फीचर तांकर थिला कि से माने सेपरेट सीवेज और रेन वाटर ड्रेनेज सिस्टम से टाइम रे थिला इट वाज द स्पेशल फीचर housing हाउसिंग रा फीचर जो घर मानक थिले दे आर बिल्ट अराउंड अ सेंट्रल कोर्टयार्ड जो डोर्स आ विंडो थिला दे आर यूजुअली ओपन टुवर्ड्स द साइड लेन्स नॉट द मेन रोड्स बहुत गुडे हाउसेस एमी थिले जो मानकर स्टेयरकेस थिला इंडिकेटिंग मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग्स कि से एटा इंडिकेट करूची कि जेहेतु से मानकर स्टेयरकेस थिला कि से टाइम रे मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग्स भी थिला हाउसेस हैड सेपरेट बेथिंग एरियाज एंड टॉयलेट्स showed advanced town planning and concern for sanitation agriculture formed the economic base of Harappan civilization agricultural surplus से time रे produce होतला significance थिला surplus food supported large urban population artisan traders and administrators जार feature थिला कि it represented the peak of agricultural development after the neolithic period so diverse crop जो से time रे होतला it strengthened the economy key point होची agricultural surplus equals to foundation of Harappan urbanization सोशल स्ट्रक्चर फीचर थिला कि ऑक्युपेशनल स्पेशलाइजेशन से टाइम रे एग्जिस्ट करथला सोसाइटी वेल ऑर्गेनाइज थिला एविडेंस हमको मिली छि कि से टाइम रे आर्टिसंस माने भी थिले ट्रेडर्स थिले फार्मर्स थिले अदर ऑक्युपेशनल ग्रुप्स भी थिले वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन जेमति कि जो प्रेशियस मेटल्स एंड सील्स थिला से गुडी को अक्रॉस सेटलमेंट्स डिस्ट्रीब्यूट हेतिला एंड सजेस्ट रिलेटिवली ब्रॉड एक्सेस टू वेल्थ मर्चेंट क्लास जो थिले से माने लॉन्ग डिस्टेंस और इंटर रीजनल ट्रेड से माने कैरी आउट करथले व्हिच इंडिकेट्स द एक्जिस्टेंस ऑफ द मर्चेंट क्लास लिमिटेशन एटा थिला कि फैमिली और किनशिप सिस्टम से टाइम रे अनक्लियर थिला
Religious system, mother goddess worship. वर्शिप क्या करुले से मदर गॉडेस को करुले बहुत ही टेराकोटा फीमेल फिगराइन्स मिली तो सेटा इंडिकेट करछि कि दे वर्शिप्ड मदर गॉडेस सजेस्ट फर्टिलिटी एंड मदर गॉडेस वर्शिप प्रोटोशिवा बा पशुपति एटा होछि मदर गॉडेस प्रोटोशिवा बा पशुपति को से पूजा करुले हॉर्न्ड फिगर जने देखिबे एटी प्रोटोशिवा तांकर एटी हॉर्न अछि फाउंड ऑन सील्स कंसीडर्ड पॉसिबल प्रीकर्सर ऑफ शिवा एबे हमें जो शिवा को पूजा करूचे he is considered possible precursor of Shiva. Nature worship से माने करुथिले frequent depiction of trees, people tree significant थिला ritual practices जेमति कि fire altars कालीबंगन ने देखिबा को मिलता है. Important point होची कि no definite temple discovered. राइटिंग एंड स्क्रिप्ट तांकर जेमति कि फीचर जेमति सील पॉटरी और धोलावीरा साइन बोर्ड रे हमें देखिया पाई था तार कैरेक्टरिस्टिक होचे अनडेसिफर्ड स्क्रिप्ट थिला लोगो सिलेबिक इन नेचर रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट यूनिफॉर्म थ्रू आउट द सिविलाइजेशन इंपॉर्टेंस ये कि इंडिकेट द कल्चरल यूनिटी यूज्ड फॉर ट्रेड ओनरशिप मार्किंग्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन आर्ट एंड आर्किटेक्चर पॉटरी मास प्रोड्यूस होतिला व्हील मेड पॉटरी kilns found at Mohenjo-daro and Harappa. Characteristic eta hochi ki bright red slip using the red ochre, black designs using the black designs se mane kemti korthile iron oxide au manganese को मिसई की करूथले. Seals रे हमें देखिबा seals गुडे को स्टेटाइट रे मेनली सेडा बना जाउतला मोर देन 3700 seals को डिस्कवर करा जायछि. seals गुडी को एमिति देखा जाय bulls elephants एटी देखि परथि एटी elephant हेछि एंड बुल भी एठी आपन को देखियो को मिलिबो टाइगर्स ह्यूमन फिगर मिथिकल यूनिकॉर्न ए सब डिपिक्ट हेतला से सब सील रे एंड इंपोर्टेंस होची कि शॉर्ट इनस्क्रिप्शंस अछि देखिबे एठी बहुत छोटो छोटो इनस्क्रिप्शंस अछि अल्प अल्प लिखा हेछि यूज फॉर ट्रेड एंड आइडेंटिफिकेशन टेराकोटा आर्ट लेट मी जूम इन फर्स्ट एटी पिक्चर देखि दियंतु टेराकोटा आर्ट रो टेराकोटा आर्ट रे फिगर से माने कौन बनाउतले बुल्स बनाउतले बुफालोस मंकीज डॉग्स बाकी सारा ऑब्जेक्ट जो टॉय कार्ड्स हला विथ व्हील्स मेटल्स कौन यूज होतला कॉपर ब्रोंज गोल्ड सिल्वर ओके देन ऑब्जेक्ट से माने कौन बनाउतले टूल्स बनाउतले वेपन बनाउतले ऑर्नामेंट वेसल्स बनाउतले एग्जांपल जेमति कॉपर एरो हेड सेल्ट नाइव्स डेकोरेटिव आइटम्स बीड मेकिंग सेटार फीचर गोटे थिला कि हाईली डेवलप्ड क्राफ्ट थिला बीड मेकिंग these are the beads important center कौन थिला चान्हुदारो थिला लोथल थिला एंड रॉ मटेरियल्स कौन सेमी प्रेशियस स्टोन्स यूज होतिला स्पेशल पॉइंट एठी मने रखिबे लैपिस लाजुली सेटा को इंपोर्ट करा जाउतला अफगानिस्तान रु एविडेंस मिलिछि फ्रॉम शोटुघाई शेल क्राफ्ट रो फीचर थिला कि एडवांस शेल वर्किंग इंडस्ट्री से टाइम रे थिला प्रोडक्ट्स जेमति कि डेकोरेटिव ऑब्जेक्ट यूटिलिटी ऑब्जेक्ट से माने बनौथिले Rise of Harappan civilization, agricultural surplus. Agricultural surplus कौन पाई से टाइम रे प्रोड्यूस होतिला fertile indus plains जोगु and they cultivated primarily wheat and barley. Evidence जेमति कि मोहेंजोदारो रो ग्रानरीज रो मिलिछि. Result supported urban population, artisans and traders. Technological advancement and craft specialization. Examples bronze metallurgy, bead making industry, wheel made pottery. Evidence मिलिछि चान्हुदारो bead industry रू flourishing trade network रो feature किंदी internal and external trade से टाइम रे carry out होतला जेमति कि evidence हमको मिलिछि lothal dockyard, standardized weights, uniform seals, Harappan artifacts at
Mesopotamia. Result, wealth and urban prosperity. Organized political और social structure थिला जेमति कि standardized bricks से माने use करुथिले, grid pattern streets थिला, great bath, drainage system. Result, efficient urban administration. Fall of Harappan civilization 1900 BCE due to climate change. से टाइम रो climate change जो केमिति cause होची weakened monsoon and increase the aridity. For example, drying of the Ghagar Hakra ancient Saraswati river. Impact थिला कि abandonment of settlement छाड़ी की समस्ते पळेले से जगारु. Ecological disasters रे example flood, tectonic activity, rivers course changes. Evidence हमको मिली मोहेंजोदारो. Economic decline से टाइम रे हमको देखिया को मिली थिला. Agricultural production reduce हला. Then trade disruption. Example, decline in the Mesopotamian trade. Migration and deurbanization. Migration areas in the Gangetic Plains and Gujarat. Result हो कि smaller rural settlements रे emergence हबा and later Harappan phase आसीबा. Vedic period. Vedic period 1500 to 600 BCE was the time period, followed by decline of Harappan civilization. Main source होची तार Vedas associated with the Indo-Aryans. दीटा phase रे इटा को हमें पढ़िबा. गोटे होची early Vedic period जाको ऋग्वेदिक कोदी and later Vedic period. ठीक अछि. रीजन अर्ली वैदिक रा होची सप्त सिंधु रीजन एंड लेटर वैदिक होची गैंगेटिक प्लेन्स. अर्ली वैदिक वर्सेस लेटर वैदिक पीरियड रा पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जदि हमें देखिबा, अर्ली वैदिक सेथि कोन थिला जन बा ट्राइबल यूनिट्स छोट छोट ट्राइबल यूनिट्स थिले. पेस्टोरल सोसाइटी थिला. फ्रीक्वेंट कैटल रेड और ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट होतिला. लेटर वैदिक पीरियड रे हमें देखिबा एग्रीकल्चरल सोसाइटी, गोटे सेटल्ड एग्रीकल्चरल सोसाइटी हमको देखिबा को मिलिबो. लार्जर किंगडम इमर्ज्ड. टेरिटोरियल वॉर्स रिप्लेस द कैटल रेड्स. कांसेप्ट ऑफ राष्ट्र इमर्ज्ड. सोशल स्ट्रक्चर इन द अर्ली वैदिक पीरियड सोशल डिवीजन एक्जिस्ट करथला, किंतु से टाइम रे फ्लेक्सिबल थिला. वुमेन से माने हायर स्टेटस एन्जॉय करथले. वुमेन से माने असेंबलीज रे पार्टिसिपेट करथले. एजुकेशन तांको दिया जाउथिला. चोज लाइफ पार्टनर्स. नो चाइल्ड मैरिज, सती और पर्दा सिस्टम वाज देयर. लेटर वैदिक रे वर्ण सिस्टम रिजिड हैला. चारिटा वर्ण से टाइम रे बाहर को आसिला. गोटे होची ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र. वुमेन मानकर स्टेटस डिक्लाइन हैला. एमर्जेंस ऑफ चाइल्ड मैरिज, सती एंड गोत्र सिस्टम. Economic activities early Vedic period रे cattle rearing main occupation थिला. pastoral economy, limited agriculture, no formal taxation. Later Vedic period रे iron technology introduce हैला. agriculture dominant हैला. forest clearance करागला for cultivation, use of plows, mixed farming, formal taxation. Sangrihitri collected the tributes, beginning of the urban centers. रिलीजियस बिलीफ अर्ली वैदिक पीरियड रे सेमाने कोन करथले, सेमाने नेचर को पूजा करूथले. फॉर एग्जांपल इंद्र, अग्नि. सिंपल रिचुअल्स सेमाने कैरी आउट करथले. हिम्स, ऑफरिंग्स. लेटर वैदिक रे यज्ञस बाय सैक्रिफाइस दे बिकेम सेंट्रल. रिचुअल बिकेम इलैबोरेट. राइज ऑफ ब्राह्मणस, प्रिस्टली क्लास. इंपोर्टेंट डिटीज जेमति कि प्रजापति, विष्णु, रुद्र. डिक्लाइनिंग इंपोर्टेंस ऑफ इंद्र एंड अग्नि. सॉरी. Enduring legacy of the Vedic tradition. Contributions जेमति कि foundation of Indian civilization को foundation को सेटा contribute करे. It influence the religion, philosophy, society and culture. एबे भी तार relevance रही छी जेमति कि Vedic tradition एबे still ritual, festival, philosophical thought and Hindu religious practices रे हमें तार continuation देखिबा को पाई थाउ. महाजनपदस. महाजनपदस टाइम पीरियड कोन 6th सेंचुरी बीसीई. ओवरव्यू देखियो गले सेटा होची सेकंड अर्बनाइजेशन. एमर्ज ड्यूरिंग द सेकंड अर्बनाइजेशन. एटा गोटे लार्ज पॉलिटिकल स्टेट्स और किंगडम्स. इंपोर्टेंट फॉर पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल सेंटर्स. की फीचर्स ऑफ महाजनपदस कोन? पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जेमि मोनार्कीज बा राज्यस देखियो पाउ जो बान को रूल करूथले कि किंग्स माने. सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन. गणसंघस बा रिपब्लिक्स को जाउतला. ओलिगार्चिक रिपब्लिक्स. डिसीजन टेकन इन द संथागर assembly, discussions and votings used. Economic activities, trade routes तांकर उत्तर पथ, दक्षिण पथ एगुडा तांकर ट्रेड रूट थिला. इकोनॉमिक बेस थिला तांकर एग्रीकल्चर, आयरन टेक्नोलॉजी द्वारा सपोर्टेड थिला. ट्रेड एंड कॉमर्स फ्लोरिश होतिला. देन सोशल स्ट्रक्चर थिला तांकर कास्ट सिस्टम से टाइम रे भी स्ट्रांग हितला. राइज इन स्टेटस ऑफ द ब्राह्मणस ड्यू टू द रिचुअल इंपोर्टेंस.
रिलीजियस डेवलपमेंट न्यू रिलीजन में बुद्धिज्म एंड जैनिज्म देखिवा को पाइबा इंपैक्ट थिला कि सेटा ब्राह्मणिकल डोमिनेंस को चैलेंज करितला सोशल एंड इकोनॉमिक चेंजेस आनितला सिग्निफिकेंस की फाउंडेशन फॉर मौर्यन एम्पायर it proved as a foundation for Mauryan empire growth of trade art culture and urbanization rise of Magadha powerful kon pai hela fertile soil and rainfall ju kaina eta gangetic plains se located thila fertile alluvial soil thila agricultural surplus and so it supported large army strategic capital jemti ki rajagriha naturally fortified thila Pataliputra strategically located thila strong defense against the enemies so the rise of Magadha reason for the rise geographical advantage ta pakithila fertile soil और rainfall फेवरेबल थिला से एरिया रे देखि परथिबे ए एरिया एटा मन रखिबे मगध fertile alluvial of Gangetic plains abundant rainfall agricultural surplus supported large armies strategic capital in the Rajagriha naturally fortified thila मु कहली Pataliputra strategically located thila and well protected thila natural resources संग iron ore timber elephants थिले efficient rulers जेमति कि important rulers थिले बिंबिसार अजातशत्रु महापद्मानंद मेथड कौन यूज होता मैट्रिमोनियल अलायंस यूज होता पावर आउरी इंक्रीज करिया को डिप्लोमेसी मिलिटरी कॉन्क्वेस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ रे ट्रेड और कॉमर्स ग्रोथ देखिवा को मिलथिला यूज ऑफ मेटल करेंसी देन स्टेट रेवेन्यू इंक्रीज हेतिला मेंटेनेंस ऑफ लार्ज आर्मी डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन गणज एंड संघर्ष रे फीचर थिला नॉन मोनार्कियल स्टेट्स थिला एक्जिस्टेड ड्यूरिंग द महाजनपद पीरियड गवर्नेंस डिसीजन को थ्रू डिबेट डिस्कशन और वोटिंग थ्रू डिसीजन निया जाउतिला असेंबली जेमति की संथगार असेंबली हॉल लिमिटेशन पार्टिसिपेशन रिस्ट्रिक्टेड टू एलिट क्षत्रिय मेल्स नो यूनिवर्सल वोटिंग राइट्स एंड सिग्निफिकेंस थिला कि अर्ली फॉर्म ऑफ रिपब्लिकन गवर्नेंस शोज एंशिएंट टूल्स ऑफ डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस इन इंडिया Orthodox and heterodox schools. Reason for emergence. Reaction against ritualism. Complex Vedic sacrifices became expensive. So common people semane kon kale semane simple path choose kale. Socio-economic changes. Rise of merchants and artisans. Buddhism and Jainism semanku gote greater social equality offer kala. Agricultural economy. Cattle mane semane important thile farming painki. Opposition to animal sacrifice increased. So ahimsa gained importance. Intellectual inquiry re Upanishadic ideas encourage the questioning concepts of Brahman, Atman and Karma. Orthodox व आस्तिक schools रा में core feature होची कि से authority of Vedas को accept करथिला. Then key facts of the Orthodox school न्याय होची logic and reasoning. Four sources of knowledge होची perception, inference, comparison, verbal, testimony. वैशेषिक होची universe made of atoms. तार 6टा category अछि substance, quality, activity, generality, particularity and inherence. Samkhya होची dualism. Purusha, consciousness, prakriti, matter. No creator, God. Yoga होची founded or systematized by Patanjali. 8टा तार अछि अष्टांग योग, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान, समाधि. पूर्व मीमांसा. Founder Jamini focus on ritual dharma karma and mantras. Vedanta Uttar Mimamsa based on Upanishad and Brahma Sutras. Concept होची ब्राह्मण atman karma rebirth. Heterodox बा नास्तिक स्कूल रो कोर फीचर होची सेमाने वेदास को रिजेक्ट करथिले एंड ब्राह्मणिकल अथॉरिटी को रिजेक्ट करथिले. मेजर स्कूल होची जैनिज्म एंड बुद्धिज्म. जैनिज्म रो फाउंडर किए थिले महावीर. तिनी ज्वेल थिले राइट पाथ, राइट नॉलेज एंड व्हाट आर द थ्री ज्वेल्स? राइट पाथ, राइट फेथ, राइट नॉलेज एंड राइट कंडक्ट. सॉरी, 5 greater vows ahimsa, satya, asteya, aparigraha and brahmacharya. Important concept होची let me zoom. अनेकांतवाद truth has many aspects. Extreme ahimsa और eternal universe. बुद्धिज्म रो फाउंडर थिले गौतम बुद्ध. चारोटी नोबल ट्रुथ जोटा होची सफरिंग एक्सिस्ट, डिजायर कॉज सफरिंग, सफरिंग कैन एंड, 8-fold path leads to liberation.
कोर आइडिया थिला कि गोटे मिडल पाथ को चूज करबा अवॉइड लग्जरी एंड एक्सट्रीम एसेटिज्म जैनिज्म एंड बुद्धिज्म एज सोशल मूवमेंट रो कॉमन फीचर तांकर थिला से माने ब्राह्मणिकल डोमिनेंस को चैलेंज करथिले अपोज द रिचुअलिज्म रिजेक्टेड कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एक्सेप्टेड फॉलोअर्स फ्रॉम ऑल सोशल ग्रुप्स एंड प्रमोटेड अहिंसा चैरिटी सिंपल लिविंग गिल्ड्स बा श्रेणी तार मीनिंग होची एसोसिएशन ऑफ ट्रेडर्स और आर्टिसंस एंड क्राफ्ट्समैन ठीक अछि ताकू कहआ जाय गिल्ड्स बा श्रेणी पीरियड होची इट बिकेम इंपोर्टेंट ड्यूरिंग द महाजनपद पीरियड लीडरशिप ताकर हेड थिले होची ज्येष्ठक एल्डर एडमिनिस्ट्रेशन होची काउंसिल ऑफ सीनियर मेंबर्स फंक्शन इकोनॉमिक फंक्शंस इट रेगुलेटेड द वेज प्रैक्टिसेस क्वालिटी स्टैंडर्ड एंड प्रोडक्शन जुडिशियल फंक्शन थिला कि सेटल डिस्प्यूट सेटल करूथिले मेंबर्स मानको भी से एक्सपेल करि परथिले सोशल फंक्शन जेमति कि विडोज ऑर्फन सिक मेंबर्स को सपोर्ट करूथिले फाइनेंशियल फंक्शंस एक्सेप्टेड डिपॉजिट्स गेव लोन्स मैनेज द रिलीजियस एंडाउमेंट्स military role जेमति कि some guilds maintain the militias assisted kings during the war relationship with state जेमति feature थिला rulers मानक सहित close tie रखुथिले guild leaders से माने kings मान को advise करूथिले state recognized guild authority result थिला कि mutual dependence between the state and the guilds Mauryan empire मौर्यन एम्पायर को फाउंडर थिले चंद्रगुप्त मौर्य 322 बीसीई कैपिटल थिला तंगर पाटलिपुत्र सेटा थिला लार्जेस्ट एम्पायर ऑफ एंशिएंट इंडिया एंड ग्रेटेस्ट एक्सटेंट जाय पहुंची थिला अंडर अशोक एंड इट कवर्ड मोस्ट ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट एंड पार्ट्स ऑफ अफगानिस्तान एंड ईरान सोर्स हमको मिली छि अर्थशास्त्र अशोकन एडिक्ट्स एंड मेगास्थेन्स को इंडिकारो एम्परर अशोक से थिले तांको विषय जदी हमें जानिबा जने पावरफुल मोनार्क थिले सेंट्रल अथॉरिटी एविडेंस मिली छि लॉ रॉक एडिक्ट्स एंड पिलर एडिक्ट्स थ्रू धाम धामर नेचर थिला इट इज नॉट अ रिलीजन एटा थिला गोटे एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट प्रिंसिपल्स थिला कि अहिंसा रिलीजियस टॉलरेंस रेस्पेक्ट फॉर एल्डर्स एंड वेलफेयर फॉर पीपल पर्पस थिला कि सोशल कोहेशन एंड इंपीरियल यूनिटी धाम विजय वर्सेस दिग्विजय आफ्टर कलिंग वॉर कोन हला से एग्रेसिव कॉन्क्वेस्ट को रिनाउंस कले एंड धाम विजय को अडॉप्ट कले जहार माने होजी कॉन्क्वेस्ट थ्रू धाम ठीक अछि ऑफिशियल्स धाम महामत से अपॉइंट कले फॉर द प्रोपगेशन ऑफ धाम इंपोर्टेंट पर्सन जेमति कि तांकर पुआ थिले महेंद्र एंड डॉटर संघमित्रा रिलेशन विथ बुद्धिज्म से जने बुद्धिस्ट उपासक बिकेम बुद्धिस्ट उपासक जने ले फॉलोअर प्रमोटेड बुद्धिज्म बिल्ट स्तूपस विहारस चैत्यस पिलर्स इंपोर्टेंट साइट होची लुम्बिनी पिलर इंस्क्रिप्शन रे अछि मौर्यन आर्ट एंड आर्किटेक्चर में मौर्यन पिलर रो फीचर जदि हमें देखिबा फ्री स्टैंडिंग पिलर एटी देखिबे कि फ्री स्टैंडिंग पिलर्स फाइनेस्ट एग्जांपल ऑफ मौर्यन आर्ट पॉलिश्ड सैंडस्टोन्स पर्पस थिला कि धाम को स्प्रेड करबा एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्ट्रक्शंस एंड कमेमोरेटिव फंक्शंस को स्प्रेड करबा इंपोर्टेंट पिलर्स जेमति कि दिल्ली तोपरा पिलर धाम एडिक्ट्स टैक्सेशन एंड वेलफेयर मेजर्स शिफ्टेड बाय फिरोज शाह तुगलक प्रयागराज बा अलाहाबाद पिलर धाम एंड गवर्नेंस सत्र मेंशन हेची मेंशन क्वीन करुवाकी स्तूप आर्किटेक्चर ओरिजिन थिला डेवलप फ्रॉम द वैदिक बरियल माउंट्स बा तुमुली पर्पस थिला कि बुद्धिस्ट वर्शिप एंड पिलग्रिमेज अशोक से कोन करथिले से बिल्डिंग को 84000 स्तूप से क्रेडिट करथिले स्तूपर जेमती पार्ट गुड हेमिस्फेरिकल डोम तार थाए देन तार थाए मेधी द बेस और प्लेटफॉर्म हार्मिका स्क्वायर रेलिंग ऑन टॉप देन वेदिका बाउंड्री रेलिंग तोरण होजी गेटवे एंड सोपान होजी स्टेयरकेस रॉक कट आर्किटेक्चर रॉक कट आर्किटेक्चर फीचर होची सॉलिड रॉक रे एटा कार्व हेताए मौर्यन पॉलिश लिमिटेशन ऑफ वुडन आर्किटेक्चर इंपोर्टेंट साइट होची बराबर के बिहार रो एंड नागार्जुनी के बिहार रो आउ जो बाकी मौर्यन आर्ट रहला यक्ष यक्षी स्कल्पचर सेटा होची लार्ज स्टोन स्कल्पचर फाउंड नियर द पटना एंड मथुरा अर्बन आर्किटेक्चर में देखिबा कुमराहार pillared hall remains megasthenes mentioned grand wooden palaces key fact hochi Mauryan palaces mainly made of wood
Literature under the Mauryas, language ଯେମିତି कि प्राकृत language of Ashokan edicts, written in Brahmi script, Pali होची Buddhist literature, Sanskrit अर्थशास्त्र, important works ଯେମିତି कि त्रिपिटका ବା पाली विनय पिटका, monastic rules, sutta pitaka teaching of the Buddhas, अभिधम्म पिटका रे अछि Buddhist philosophy. Ashokan edicts कोथरे लेखा ହେଇଛି प्राकृत languages रे Brahmi script, it discuss the dhamma, welfare measure and governance. अर्थशास्त्र ର author होचନ୍ତି कि कौटिल्य बा चाणक्य. टॉपिक कौन कवर ହେଇଛି statecraft, administration, economy, espionage and military strategy. Foreign account, फॉरेन अकाउंट आम देखिए मेगास्थेन्स से जने ग्रीक एम्बेसडर थिले से इंडिका लिखिथिले जोटा आपण माने पढिथिबे डिटेल्स रे मेगास्थेन्स इंडिका डिस्क्राइब मॉरियन एडमिनिस्ट्रेशन एंड सोसाइटी पोस्ट मॉरियन पीरियड एंड इंडो ग्रीक्स नेक्स्ट चैप्टर ओवरव्यू टिके आम देखिबा बट टेक 5 minute break.
So, post-Mauryan period and Indo-Greeks. Next topic. Northwest India को जो military invasion हैला by Bactrian Greeks after the Mauryan decline. After Mauryan decline, leading to the establishment of several Indo-Greek kingdoms. Okay, and ये जो political contact हैला, जो political contact जो evolve हैला, and it transformed into a deep cultural and philosophical exchange जो थे कि जो ग्रीक रूलर्स माने थिले से माने डायरेक्टली इंडियन रिलीजियन सहित लाइक बुद्धिज्म से माने एंगेज कले एंड अर्ली फॉर्म्स ऑफ वैष्णविज्म सिग्निफिकेंस कोन थिला फर्स्ट होची रेवोल्यूशन इन कॉइनेज से माने कोन करथिले से माने एडवांस्ड कॉइनेज इंट्रोड्यूस कले इंडिया को they were the first rulers to issue coins with realistic portraits on coins माने जो किंग्स मानकर जो पोर्ट्रेट थिला एंड तांकर जो बाइलिंगुअल कॉइन थिला दे वर वेरी क्रूशियल फॉर डिसिफरिंग द एंशिएंट इंडियन स्क्रिप्ट्स लाइक द करोस्थी स्क्रिप्ट बाकी गांधार स्कूल ऑफ आर्ट इट इज वेरी इंपोर्टेंट जो कल्चरल फ्यूजन टा हैला इट गेव राइज टू द गांधार स्कूल ऑफ आर्ट गोटे यूनिक सिंथेसिस ऑफ हेलेनिस्टिक ग्रीक आर्टिस्टिक स्टाइल and Indian Buddhist art eta mone rakhibo and Indian Buddhist team this heavily influenced the first human depiction of Buddha philosophical exchange religious and philosophical dialogue ye jo interaction ta hela it led to significant philosophical engagement famously recorded in the Buddhist text Milinda Panha dialogue between the meander by Milinda and Buddhist monk Nagasena which details the discussion between the Indo-Greek ये थिले किए Indo-Greek king थिले meander and a Buddhist sage scientific exchange Greek astronomy and astrology influenced India scientific exchange रे ସେମାନେ introduce करते elements of just a second of Hellenistic astronomy Hellenistic astronomy and astrology to India which influenced later Indian scientific thought in these fields तापरे हमरा आसी गला गुप्ता पीरियड रो फाउंडर किए थिले श्री गुप्ता एम्पायर को टाइम रे इमर्ज हितला इन द 4th century 4th century CE ठीक अछि following the Kushana's decline ओके जो श्रीगुप्त थिले सी एम्पायर को एस्टाब्लिश करथिले किंतु एम्पायर टी सिग्निफिकेंटली ग्रो कला अंडर चंद्रगुप्त फर्स्ट गुप्त पीरियड 319 रु 320 सीई जाके चलीथिला एंड ए एरा को ऑफन इट वाज कॉल्ड गोल्डन एज ऑफ इंडिया Empire tea covered most of the subcontinent and it was very crucial for science, literature, art, technology development. सेइथिबाई याको golden age बोली कुआ जाउतला. Most information about this 160-year-old empire comes from the coins and inscriptions. एगुडी को होची sources. काइना most information हमको एई दीटा जिनसरो मिली थाए. फर्स्ट आम देखा समुद्रगुप्त से ग्रेटेस्ट गुप्त रूलर थिले तांकर मिलिटरी कॉन्क्वेस्ट जो से बहुत फेमस थिले एंड स्ट्रेटेजिक प्लानिंग भी तांकर बहुत फेमस थिला सांकु एक्सपेंशनिस्ट एंड मिलिटरी स्ट्रेटेजिस्ट भी कहा जाउतला ही वाज द ग्रेटेस्ट गुप्त रूलर एंड कैंपेन तांकर डिटेल्ड अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन रे अछि प्रयाग प्रशस्ति कैंपेन इंक्लूडेड द कॉन्क्वेस्ट ऑफ नॉर्थ इंडिया आर्यवर्त consolidating control over the Gangetic heartland and subjugating the 9 Naga rulers. Conquered the Aryavarta Gangetic region and 9 Naga rulers. Patron of arts. Skilled poet, musician, admirer of fine arts से थिले and as described in the Allahabad pillar inscription. तांको title दिया जाइला कवि राजर, king of poets of for Sanskrit composition.
ठीक अछि आता जो कॉइन थिला डिपिक्ट हिम प्लेइंग द वीणा coin showing him playing the veena patronized poet and scholars including Harisena fostered the flourishing of the Sanskrit literature and learning Chandragupta II peak of Gupta empire तांको विक्रमादित्य भी कहा जाए Vikramaditya for his expansion and consolidation of the empire, particularly जो western and central India. तांकर जो रियाइन थिला, it marked the peak of the Gupta power and influence, military campaign and territorial expansion जदि हमें तांकर देखिबा. चंद्रगुप्त सेकेंड से तांकर empire को expand करिथिले by conquering the western India, notably defeating the Rudrasimha third. लास्ट साको रूलर से थिले एंड एनेक्सिंग मालवा एंड काठियावाड़ पेनिनसुला कोन एनेक्स करथले मालवा एंड काठियावाड़ पेनिनसुला बा सौराष्ट्र ताकर जो टेरिटोरियल कंट्रोल से एक्सटेंड हेतला सिग्निफिकेंटली जोटा कि स्ट्रेच हेतला फ्रॉम मालवा एंड गुजरात इन द वेस्ट टू बंगाल इन द ईस्ट with Narmada river marking its southern boundary. Economic importance तांकर कौन थिला से ports को control करथिले ब्रोच सोपारा कैम्बे रिजल्ट थिला कि फॉरेन ट्रेड ई टाइम रे इंक्रीज हेतला सेकंड कैपिटल तांकर कौन थिला उज्जैन थिला पैट्रोनेज तांकर याइन टाइम रे गोटे सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस हेतला आर्ट लिटरेचर एंड लर्निंग रे एंड संस्कृत प्राइमरी लैंग्वेज हेतला ऑफ कोर्ट आर्ट एंड राइटिंग एंड ही वाज अ नोटेबल पैट्रन ऑफ स्कॉलर्स एंड आर्टिस्ट and a period it saw the rise of some stone temples and advancements in cave architecture also scholars जेमती कालिदास आर्यभट्ट ए टाइम रे हमको देखिवा को मिलंती डेवलपमेंट्स संस्कृत लिटरेचर एस्ट्रोनॉमी मैथमेटिक्स अजंता केव्स सोशल डेवलपमेंट जदि हमें देखिबा फर्स्ट जदि फैमिली स्ट्रक्चर फैमिली स्ट्रक्चर देखिबा इट वाज बेस्ड ऑन द धर्मशास्त्र टेक्स्ट हिस्टोरियंस आर्ग्यू करंती कि से स्ट्रेंथनिंग ऑफ पैट्रियार्कियल नॉर्म से टाइम रे स्ट्रेंथन हेतला एंड से टाइम रे सबऑर्डिनेशन ऑफ वुमेन भी इंक्रीज हे जाइतला देन वुमेन मान को पब्लिक लाइफ रो विथड्रॉ कर दिया जाइतला देन प्रेफरेंस फॉर सन्स ओवर डॉटर्स एटसेट्रा एटसेट्रा सो वुमेन मानकर जदि हमें से टाइम रे ट्रेंड देखिबा decline in status, increased patriarchy, preference of sons, restriction from public life, practice in the child marriage, early sati, first recorded sati in the Iran inscription 510 CE रे सेठी लेखा जाइची स्त्री धन माने होची मूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ वुमेन जिन ज्वेलरी क्लॉथ्स गिफ्ट्स ताको स्त्री धन बोली कुआ जाए 6 टाइप्स कात्यायन स्मृति लिस्ट एठी कोन लिस्ट हेची 6 टाइप्स ऑफ स्त्री धन होची गिफ्ट बिफोर मैरिज ब्राइडल पोजेशन ऑफ गिफ्ट फ्रॉम इन-लॉज ब्राइड प्राइस फैमिली गिफ्ट्स रिसीव्ड ड्यूरिंग मैरिड और अनमैरिड लाइफ कास्ट सिस्टम रा फीचर चारोटी वर्ण थिला ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र एटा कंटिन्यू हेतला एंड एटा स्ट्रेंथन भी हेतला ब्राह्मणस माने से माने को बेनिफिट मिले जाउतला फ्रॉम ब्राह्मदेय जोटा होची टैक्स फ्री लैंड ग्रांट्स ताको मिलुतला जातीज इंक्रीज हला थ्रू द वर्ण समकार अनटचेबिलिटी इंटेंसिफाई हला चंडल मानकू विलेज बाहर रहिबा को फोर्स करा गला सोर्स होची फाहिन तो फाहिन से कौन कले सी ऑब्जर्व कले कि जो चंडालस माने थिले दे लिव्ड आउटसाइड द विलेजेस एंड अनाउंस्ड देयर प्रेजेंस टू अवॉइड कांटेक्ट विद द हायर कास्ट रिलीजन गुप्त रूलर्स माने हिंदू थिले एंड रिलीजियस टॉलरेंस टुवर्ड बुद्धिज्म से माने बुद्धिज्म को टॉलरेट करुथिले लेस रॉयल पैट्रोनेज टू बुद्धिज्म गुप्त पीरियड एज गोल्डन एज आर्ट जदि हम देखबा स्कल्पचर होची वाराह अवतार स्कल्पचर पेंटिंग अजंता केव पेंटिंग बुद्धा एंड जातक स्टोरीज
Architecture, early standing stone temples, Nagara style. Just a second. हाँ, गुप्ता पीरियड रे देखिया को मिली थाए and most significant contribution to Nagara temple architecture with example like amara Dasavatara temple Devgad, Tigawa, Bhumara, Ko, and जो Panchayatana style of temple architecture, it was associated with the Gupta period. Features a central shrine surrounded by 4 subsidiary shrines at cardinal directions. Okay. पंचायतन स्टाइल रे कोन थाए गोटे सेंट्रल श्राइन थाए एंड चारोटी सब्सिडियरी श्राइन थाए टोटल केटा मन रखिबो पांचटा श्राइन थाए पंचायतन रे लिटरेचर से टाइम रे प्रोमिनेंट संस्कृत पोएट्स को इमर्जेंस हितला एंड प्ले राइट सच एज कालिदास एंड विशाखा दत्त फाइनल कंपाइलेशन ऑफ वैदिक टेक्स्ट धर्मशास्त्र टेक्स्ट ऑफ एपिक रामायण महाभारत से टाइम रे फाइनल फॉर्म नेतले इज कंसीडर्ड हैव बीन डन इन द गुप्ता पीरियड रामायण महाभारत एंड द धर्मशास्त्र कालिदासंकर एठी वर्क जदि हम देखियो मेघदूत रघुवंश एंड द कुमार संभव गोल्डन पीरियड of Sanskrit literature. Gupta period time रे Sanskrit से तरह classical form attend करतला largely due to Panini's foundational grammar and Gupta's extensive patronage. ठीक अछि जो Sanskrit से supersede करथिला प्राकृत को and it became the language of administration and elite culture. And ए जो era टी थिला it witnessed a remarkable flourishing of the Sanskrit literature. Administration, court culture, literature ए सबुरो language संस्कृत हेतला एंड जो एक्जिस्टिंग एपिक थिला रामायण आ महाभारत इट अंडरवेंट द फाइनल कंपाइलेशन जोटा कि सिंबलाइज करे विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इविल नुआ जॉनरास जेमति कि काव्य माने ऑर्नेट प्रोज सेगुडी को भी इमर्ज करिथिले से टाइम रे सो सिक्युलर राइटिंग से टाइम रे भी थ्राइव करथला कवरिंग द डाइवर्स टॉपिक्स एपिक जेमति कि रामायण आ कहली फाइनल कंपाइल हेतला स्टेट क्राफ्ट जमती नीति सार कमंडक स्टोरी लिटरेचर आम देखिए पंचतंत्र विष्णु शर्मा ड्रामा रे देन संगम पीरियड
Sangam period actually last karitila from approximately 300 BCE to 300 CE, and Sangam period it is notable for its extensive literature जे कि प्रोवाइड करे डिटेल्ड इनसाइट इनटू सोशल इकोनॉमिक एंड कल्चरल लाइफ ऑफ एंशिएंट साउथ इंडिया एंड ए जो एराटा थिला इट मार्क्स अ ट्रांजिशन सॉरी from tribal to more organized societies with early advances in social complexity and extensive trade networks. Language and script जदि आमे देखिबा अर्ली तमिल संगम लिटरेचर कंपोज हेतला अर्ली तमिल रे जोटा कि शोकेस करे गोटे रिच वोकैबुलरी एंड कॉम्प्लेक्स ग्रामर रिफ्लेक्टिंग लिंग्विस्टिक सोफिस्टिकेशन मिनिमल इन्फ्लुएंस थिला संस्कृत रो अर्ली तमिल लिटरेचर इट एग्जिबिट्स minimal influence from Sanskrit, emphasizing a distinct linguistic identity. Tamil Brahmi script. Script ता तांकर थिला Tamil Brahmi script. Tamil Brahmi script who use करा जाउतला से period रे गोटे adaptation of the Brahmi script. It was an adaptation of the Brahmi script जोटा कि primarily it was found in the Madurai region and dates back to the 2nd century BCE onwards and early century CE. Grammar होची तोल्कापियम होची ओल्डेस्ट सर्वाइविंग तमिल ग्रामर जांको ऑथर थिले तांकर तोल्कापियर. It provide insights into Tamil grammar and also reveals political, social, economic condition of the Sangam period. अकाम होची लव पोएट्री संगम लिटरेचर आमे देखिबा अकाम माने होची कोन अकाम माने होची लव पोएट्री. थीम एंड स्टाइल थिला अकाम पोएट्री से एक्सप्लोर करे लव पर्सनल रिलेशनशिप्स यूजिंग नेचुरल इमेजरी. डिफरेंट लैंडस्केप सिंबलाइज द स्टेजेस ऑफ लव जेमति की होची कुरिंजी डाउची एन कुरिंजी माने कोन कुरिंजी होची इट रिप्रेजेंट्स द क्लैंडस्टाइन लव. आ गोटे कोन नेइथाल नेइथाल होचे एटा कोन सिंबलाइज करे लॉन्गिंग एंड सेपरेशन. सो लव पोएट्री रो थीम थिला लव इमोशंस पर्सनल लाइफ. ठीक अछि. सोशल कॉन्टेक्स्ट में देखिया गले इट रिफ्लेक्ट द सोसाइटल नॉर्म्स एंड कस्टम्स प्रोवाइडिंग अ विंडो इनटू द प्राइवेट एंड इमोशनल लाइव्स ऑफ पीपल. कुरिंजी एंड नेइथाल. पुरम होची पब्लिक पोएट्री वार एंड पब्लिक लाइफ पोएट्री होची पुरम. थीम एंड स्टाइल होची तारो पुरम पोएट्री से फोकस करे वार हीरोइज्म और पब्लिक लाइफ ऊपर एंड इट सेलिब्रेट्स द ब्रेवरी ऑफ द वॉरियर्स रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द किंग्स लॉयल्टी ऑफ द सब्जेक्ट पॉलिटिकल और सोशल कॉन्टेक्स्ट यदि हमें तार देखियो जिबा डॉक्यूमेंट्स द कॉन्फ्लिक्ट एंड अलायंसेस ऑफ द चेरा चोला एंड द पंड्या किंगडम एंड शेडिंग लाइट on the socio-political dynamic. Historical relevance it offer करे first hand account of events, personalities and socio-political structure contributing reconstruction of the Tamil history. Society tinai system थिला. Social structure माने संगम सोसाइटी ऑर्गेनाइज हेतले अराउंड द कॉन्सेप्ट ऑफ तिनाई माने कोन इट इज डिवाइडेड द लैंड इनटू 5 इकोलॉजिकल जोन्स. 5टा इकोलॉजिकल जोन. फर्स्ट होची कोन कुरिंजी माने कोन माउंटेन्स. देन मुलाई
मुलाई होची pastoral lands आ गोटे कोन मरुदम होची wetlands and Nainital is coastal region last होची पलाई arid zones जो कुरिंजी रो जो लोक माने से माने हंटिंग गैदरिंग रे एंगेज रहउतिले while those in the mulai they practice the animal husbandry. Marudam they supported the agriculture, Nainital sustained the fishing and salt making, and the palai drove its inhabitants to raiding. Sangam period social structure hoji kuti system. Kuti system, uh, while the four-fold Varna system was known, it hadn't become the defining feature of Sangam society. Social division fluid thila with status determined by occupation and clan. Clan को कहते kuti. माने clan based society. Kuti system of Sangam period सेटा होची clan based social organization जोटी की status और identity were determined by clan affiliations rather than rigid caste hierarchy. Status based on occupation and clan, Varna system known but not dominant. Women manakara status, women mane significant status hold करुथिले society रे and सेमानकर contribution थिला literature, education, economic activities जेमति कि paddy cultivation हैला, cattle rearing हैला. Notable female poets जदि आमे सेई टाइम रा देखिबा को जिबा ताले Aviar, Nachelier, I hope I'm pronouncing their name right, and Kakai Padinier. ठीक अछि लव मैरिज कॉमन थिला बट प्रैक्टिसेस जेमति कि सती हैला एंड हार्डशिप्स ऑफ विडोज दे एक्जिस्टेड. रिलीजन रिलीजियस बिलीफ रे सोसाइटी वर्शिप करूथिला जो इंडिजिनियस डीटी और नेचर स्पिरिट को विथ सम स्कॉलर से माने सजेस्ट करंती कि अर्ली जैनिज्म और बुद्धिज्म इन्फ्लुएंस थिला लोकल प्रैक्टिसेस ऊपर. रिलीजियस बिलीफ डीपली इंटरवाइंड थिला एनवायरनमेंट एंड डेली लाइफ ऊपर. आर्ट एंड आर्किटेक्चर जदि आमे फीचर देखिबा को जिबा ताहले होची दिस पीरियड सॉ द बिगिनिंग ऑफ टेंपल आर्किटेक्चर एंड मेगालिथिक स्ट्रक्चर्स. अर्ली टेंपल से गुडी को सिंपल थिला बट सिग्निफिकेंट थिला. बरियल प्रैक्टिसेस इंक्लूड करा जाउथिला कंस्ट्रक्टिंग लार्ज स्टोन मॉन्यूमेंट इंडिकेटिंग एडवांस्ड कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स. इकोनॉमी एग्रीकल्चर रे तांकर मेन क्रॉप थिला पैडी बा राइस बा मिलेट्स. एग्रीकल्चर वाज द बैकबोन ऑफ संगम इकोनॉमी with paddy or rice and millets as primary crops. Advanced irrigation techniques including tanks and dams it supported agriculture in the non perennial riverine system of the region. So irrigation tanks and dams भी सही टाइम रे थिला. ट्रेड इंटरनल ट्रेड से टाइम रे थ्राइव करूथिला with goods transported via well maintained roads and secured marketplaces. जो पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी थिला. It mentions Indian exports like spices, textiles, pearls, precious stones. Roman gold coins भी discover हेतिला South India रे corroborate this trade. Crafts weaving गोटे major industry थिला producing fine textiles and mentioned in the Sangam literature. Metallurgy significant thila with advanced iron and steel production for tools and weapons. Bead making भी गोटे well developed craft thila often used in trade. Ancient Indian schools of art. Take 5 minutes break.
एंशिएंट इंडियन स्कूल्स ऑफ आर्ट जो अर्लियर स्कूल्स ऑफ आर्ट थिला इंडिया रे दे वर इंस्पायर्ड बाय रिलीजन schools at Gandhara and Mathura were connected with the Mahayana Buddhism. Gandhara and Mathura they were connected with the Mahayana Buddhism and produced many Buddha and Bodhisattva images. Okay, किंतु जो अमरावती स्कूल थिला it patronized by the Satavahanas. Under the Satavahanas created narrative art depicting scenes from the life of Buddha. Key schools of art जदि हमें देखिबा फर्स्ट होची हमर गांधार स्कूल तार पीरियड होची फर्स्ट टू थर्ड सेंचुरी सीई जाए लोकेशन होची लोकेशन इज अफगानिस्तान गांधार रीजन अफगानिस्तान गांधार रीजन आर्टिस्टिक इन्फ्लुएंस जेमति कि फ्यूजन ऑफ इंडियन एंड ग्रेको रोमन ट्रेडिशंस ड्यू टू फ्यूजन ऑफ Indian and Roman Greco-Roman traditions due to the region's exposure to Indian and Western culture during the Kushana Empire. Materials कौन use होतिला blue grey schist. की कैरेक्टरिस्टिक्स जदि हमें किबा की फीचर्स जदि हमें देखियो जो हमें जानले इंडो ग्रीक ग्रेको बुद्धिस्ट स्टाइल रेटा होतला ठीक अछि एंड इट कंबाइन द वेस्टर्न आर्टिस्टिक कन्वेंशन विद द बुद्धिस्ट थीम्स स्कल्पचरल डिटेल रे हमें जे देखबे ऑफन डिपिक्ट द बुद्धा विथ रियलिस्टिक ह्यूमन लाइक फिगर एंड एलाबोरेट थिला डिटेल अटायर रेमिनिसेंट थिला ऑफ द रोमन स्टाइल आइकोनोग्राफी influenced by the Greco-Roman deities Greco-Roman deities and iconography with a focus on naturalism and the anatomical accuracy. Contribution was the first human image of Buddha. Example, Buddha sculptures with the Hellenistic features. Mathura school. Now, Mathura school of flourishing period hoji 1st century CE onwards. Location hoji city of Mathura ba Uttar Pradesh, present day Uttar Pradesh jota city of Mathura. Predominantly the indigenous style rooted in earlier Indian artistic tradition and material use hotla red sandstone with black spots. Indigenous sensibilities that emphasize kore local artistic tradition with less influence from the outside cultures. Then voluminous but robust figures, Buddhist, Jain and Brahminical themes, then yakshas, yakshinis and apsaras. Okay, so they reflect a more expressive representation of the human form. Contribution, influence Gupta sculpture, influenced later artistic development in India including the Gupta style known for its graceful and spiritual sculptures. Third amar hoji Amravati school 150 BCE ru 350 CE. Region Andhra Pradesh, developed under the patronage of the Satavahanas and the Ikshvaku rulers with a focus on narrative art.
materials white marble like stone से time रे use होतला features जेमती कि narrative buddha art buddha life stories dynamic medallions naturalistic scenes found on stupa railings and plinths contribution influenced the Sri Lanka and Southeast Asia माने सी गोटे सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट छाड़ीला ऑन आर्टिस्टिक ट्रेडिशन इन श्रीलंका एंड साउथ ईस्ट एशिया हाइलाइटिंग द रोल ऑफ कल्चरल एक्सचेंज इन शेपिंग द रीजनल आर्टिस्टिक ट्रेडिशन अदर इंपोर्टेंट थीम्स इन आर्ट रे फर्स्ट आमे देखिबा बुद्धिस्ट आर्ट buddhist stupas and art जेमती कि early buddhist stupa art it blended जो folk motifs and narratives to make buddhist teaching accessible to the masses jataka tales and symbols like जेमती wheels hela thrones hela footprint hela सेगुडिक they were represented the buddha avoiding direct human depictions and ये जो art form डी also fused the motifs from earlier Indian tradition also जेमती कि yakshas, nagas, animals जेमती lion, elephant making it visually engaging and relatable. Indian philosophy in art. Indian art से हमें जानिले कि reflect करे spirituality and philosophy often with religious themes guiding its forms and expression temples like जेमती कि Kailasa temple at Ellora it symbolizes the connection between the physical and the cosmic so it act as microcosm of the world cosmic symbolism mane rakhibo Barhat Sanchi and Amravati daily life and nature okay art also celebrates sensual vitality capturing the natural world's beauty and daily life जेमती कि आमे देखिले Bharat Sanchi and Amravati cosmic symbolism such as Konark sun temple से illustrate करे link between ritual and the universe's structure so cosmic order and ritual symbolism temple architecture Nagara style नगर स्टाइल टेम्पल आर्किटेक्चर को जगह रे एटा फेमस एटा होची नॉर्दर्न इंडिया रो टेम्पल आर्किटेक्चर स्टाइल एग्जांपल्स जेमती कि महादेव टेम्पल एट नाचना कुथारा 7th सेंचुरी रो ब्रिक लक्ष्मण टेम्पल एट सिरपुर खजुराहो टेम्पल्स ओके तार फीचर होची जस्ट अ सेकंड हां तार फीचर होची कि टेम्पल गुडी को स्टोन प्लेटफॉर्म ऊपर बना जायची विथ स्टेप्स लीडिंग अप टू देम एंड टिपिकली सेमानकर एलाबोरेट बाउंड्री वॉल्स बा गेटवेज किछि नाही दे लैक द एलाबोरेट बाउंड्री वॉल्स और ये गेटवेज अर्लीस्ट टेम्पल हैड अ सिंगल टावर और शिखर आ जो परे जो टेम्पल्स गुडी को आसिले ए स्टाइल अंडर रे माने नगर स्टाइल अंडर रे दे ऑफन फीचर्ड मल्टीपल शिखरस गर्भगृह बा sanctum एटा always located directly under the tallest tower गर्भगृह below the tallest tower and subdivisions जेमती कि लाटिना और रेखा प्रसाद एटा होची मोस्ट कॉमन टाइप एटा होची मोस्ट कॉमन टाइप with square base and walls that curve or slope inward to a point at the top okay Thamsana hochi broader and shorter than Latina with roofs composed of several slabs rising gently to a point then Valavi hochi rectangular building with roofs that rise into a vaulted chamber एटी होची तार सब टाइप्स द्राविड़ स्टाइल को जगह रो सदर्न इंडिया रो स्पेशली तमिलनाडु एग्जांपल्स बृहदेश्वर टेम्पल एंड द मीनाक्षी टेम्पल विमान थाए एटी देखि पारुथिबे विमान एट एतिक होची विमान माने एटा होची गोटे पिरामिडल टावर ओवर द गर्भगृह एटा होची गर्भगृह
ठीक अछि एटा होची पिरामिडल टावर ओवर द गर्भगृह गोपुरम होची लार्ज ऑर्नेट एंट्रांस गेटवे ताकू गोपुरम कहंती लार्ज ऑर्नेट एंट्रांस गेटवे को कहवा जाय कोन गोपुरम एनक्लोज्ड कंपाउंड टेंपल विद इन द वॉल्स आउटर वॉल इंटीग्रेटिंग द गोपुरम्स पिलर्ड हॉल थाए जाहाकू कहा जाए कोन मंडप एठी देखि परतिबे एठी अछि पिलर्ड हॉल्स पिलर अछि एटा गोटे हॉल फॉर पिलर्ड हॉल मंडपस फॉर वेरियस पर्पसेस गोटे वाटर टैंक भी थाए कॉमन इनसाइड द टेंपल कॉम्प्लेक्स और रिचुअल्स एंड एटा ऊपरटा एटा होछि शिखर फीचर देखिले विमान पिरामिडल टावर गोपुरम गेटवे एनक्लोज्ड कंपाउंड वॉल्स मंडपस वाटर टैंक्स देन वेसरा स्टाइल होछि कर्नाटकर ठीक अछि एठी देखि परतिबे एटा होछि वेसरा स्टाइल रो एग्जांपल हमर होछि चेन्नाकेशव टेंपल बेलूर एंड द होयसळेश्वर टेंपल हेलेबिडु फीचर होछि आर दे इंक्लूड वेरियस सब टाइप्स ऑफ चालुक्यन जेमति कि चालुक्यन राष्ट्रकूट होयसाळस विजयनगर आर्किटेक्चर्स फीचर होची इट इज अ सिंथेसिस ऑफ द स्टाइल्स जेमति कि मिक्स ऑफ नगर एंड द्राविड ऑफन स्टार शेप्ड प्लेटफॉर्म थाए मन रखिबो स्टार शेप्ड प्लान एटा होची तार गोटे यूनिक फीचर डेकोरेटिव एलिमेंट्स थाए रिचली डेकोरेटेड विथ स्कल्पचर्स एंड फ्रेजेस latch turned pillars intricately carved ceiling and art hochi elaborate carvings on ceilings. Regional style of temple architecture. Regional temple style first होची हमारा चालुक्यन आर्किटेक्चर. चालुक्यन आर्किटेक्चर कोटिकार कर्नाटकार. Example विरूपाक्षा टेम्पल, पापनाथ टेम्पल, लादखान टेम्पल. And तांकर फीचर होची एटा होची गोटे वेसरा स्टाइल सब टेम्पल, सब टाइप ऑफ द वेसरा स्टाइल ऑफ टेम्पल्स exhibiting a combination of the Nagara and the Dravida mix. Characteristic feature होची ताकर होची star shaped plan थाए with projecting angles. विजयनगर आर्किटेक्चर होची कर्नाटकर अगेन एटा भी कर्नाटकर एग्जांपल विरूपाक्षा टेम्पल हम्पी एंड हजारा राम टेम्पल and it is a combination of Chola, Hoysala, Pandya and Chalukya element and has Indo-Islamic influences. ठीक अछि एटा highly decorated थाए with geometric pattern and carvings. Geometric pattern and carvings. Taller surrounding walls and pillars with mythical creatures. Then amara asibo Kalinga style. Kalinga style hochi Odisha ro. Example Jagannath temple and Lingaraj temple. Jagannath temple kodi Puri and Lingaraj temple Bhubaneswar. Main parts hochi tankara देउଳ बा sanctum jahaku kuha jaye, then jagamohana assembly hall and नाट मंदिर फेस्टिवल हॉल. रेखा देउळ होची कर्वेलिनियर शिखर होची गोटे टॉल कर्वेलिनियर शिखर को रेखा देउळ बोली कुहा जाय. देन पीढ़ा देउळ होची पिरामिडल रूफ रिजेंबलिंग अ स्टेप्ड पिरामिड. खाकरा देउळ बैरल रूफ और फीमेल डेटीज फॉर फीमेल श्राइन्स.
ओके तो सो आज आम 11 टा टॉपिक जहाँ हमर एंशिएंट रो डिस्कस करिवार थिला हमें तो डिस्कस कर साचे नेक्स्ट वीक मिडिवल रो मैराथन आसीबो आपण मन पई सो थैंक यू फॉर वाचिंग